Namaste and good morning, everyone. Let's start the class. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurбхавः Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya Om Sahna Bhavatu Sahna Bhunaktu Saviryam Karvavahe तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम. Okay, let's open our Ved Panchashdi little book, page number 49. We're going to look at the next 5 mantra, starting from mantra number 16. Okay. So it says mantra and sa. Sa means that sa stands for Sankhya, like a number. Okay, Sankhya. So this mantra number 16 is from Yajurveda. Rishi Sankastup Chand Trishtup Om Udvayam Tamaspari Sava Pashyant Utram Devam Devatraha Suryagam Jyotir Uttamam. Ham Udvayam, that means Udharav Drashta bane. Udharav Drashta means ऊपर देखने वाले. और भू पृथ्वी भुवा अंतरिक्ष से भी ऊपर जहां केवल ब्रह्म ही है और ब्रह्म की ज्योति है, जो ज्योति कोटि सूर्यों से भी अधिक है, और जिस ज्योति को ब्रह्मलीन योगी ही देखते हैं, हम उस ज्योति को मानसिक रूप से देखें और कामना करें कि हम देह उपरांत उसी ज्योति में समा जाएं. गम. So in the footnote, clearly he says, Bhu means Prithvi, Bhuva means अंतरिक्ष से आगे जहां पर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं, वो स्वा. So ओम भू भुवा स्वा. सर्वत्र एक ज्योति है, कोटि सूर्य समान, दिव्य ज्योति वह जानिए, कहीं न जिस समान. See, there are physical jyotis also. There's a Devik Jyoti also. Okay, and this is a Divya Jyoti. उधरव दृष्टा हम बने, निरखे ज्योति सब काल, समाये उसी ज्योति में, आए अंत जब काल. प्रभो हमारी प्रार्थना करने नाथ स्वीकार, जीव में अज्ञान भरा है संग अंधकार. अंधकार वह दूर हो और संग अज्ञान, प्रभु कृपा से हो सकत, मिलत प्रभु से ज्ञान. उधर दृष्टा मुझे बनाओ, स्वलोक में भी पहुंचाओ, वहां पर दिव्य ज्योति तब नाथ, राखिए मुझे वहां निज साथ. That is the goal of all of us, to become one with that Divya Jyoti, Brahma. Let's look at the English translation also. Some of you have those English books too. And this is on page number 47. Oh God, let us attain the higher vision. Beyond the earth and the sky, there exists nothing but Brahma, the Supreme Being, and the light of Brahma, which is brighter than millions of the suns put together, and which is seen only by the Brahma-lean yogis who have attained oneness with the Absolute. Let us perceive that light mentally and aspire to merge in the same after this life.
So this mind which just keeps on thinking about the worldly things, we are telling that mind to perceive that light. One light is omnipresent, like millions of suns it is. Know that as the divine, beyond comparison, indeed. Let's have a higher vision. Behold the light each second. May we merge in the same when life would come to end. This is our prayer. Accept it, O Lord dear. Self is full of ignorance and the darkness sheer. O Lord, cast off the clouds, ignorance and darkness twain. By thy grace alone, thy wisdom we obtain. Grant me the higher vision, the sure world I may see, full of thy divine light. Keep me there along with thee. Let's look at verse number 17. And this is from Yajurved, Chand Gayatri, and Rishi's name is Praskanva. Om Adutyam Jat Vedasam Devam Vahanti Ketvaha Drishe Vishwaye Suryam. प्रभु को देखना हो तो प्रभु की विभूतियों में देखें। वह सर्वज्ञ देव भगवान सर्वत्र प्रकट हैं। उद्युत्यम, सृष्टि को प्रत्येक वस्तु उसके यहाँ विद्यमान होने का निशान है। मानो वे सभी प्रभु के केतु हैं और वे सभी वस्तुएं उस ज्योति स्वरूप भगवान के मानो प्रत्यक्ष दर्शन करवा रही हैं। देखना हो भगवान को, देख लो विभूतियां। देखना हो यदि बाप को, देख लो संतान को। भगवान की विभूतियां प्रकट करे एक बात, कन कन में वह नाथ है, देख लो साक्षात। विभूति तो वह केतु है, गाड़ा खुद भगवान। स्वयं विराजो जगत में, मेरा शासन जान। सूरज को ही देख लो, विभूति मेरी जोए। मैं हूं उसमें चमकता, देख सके हर कोई। विभूति में प्रभु रूप जो, योगी देखे सोए। माया छादित रूप वह, प्रभु ने राखा जोए। प्रभु की प्रतिमा जग है भाई, जग में प्रभु खुद रहत समाई। प्रभु देखूं यदि इच्छा होए, एक कन उठा देख लो सोए। If one intends to see God, see in his countless manifestations. The omniscient Lord is obvious everywhere. Everything of the creation symbolizes his presence here. Behold them as his creations, and all these things provide obvious sight of God, who is in the form of all-pervading light. If curious to see God, spot his presence and power. See the offspring to know the Father. All manifestations of God unfold one truth herein. In each speck he dwells. Obviously, you behold him. His manifestations reveal. Each form is his creation. In entire universe I dwell and run the administration. Just behold the sun, my power's presence. I shine therein, anyone can experience. His form in manifestations, yogis only all behold. Maya veils that form, so is the way of Lord. The universe is image of God. In all, everywhere he rests. If curious to see him, pick and see in speck of dust. See, that's why we say that he is in kan kan. We got to just have that kind of a vision to be able to see him. Mantra number 18. Again from Yajurved, Trishtup, Angiras Rishi.
ओम चित्रम देवानाम उद गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपराह द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत्स्थ उषश्च स्वाहा. So this is one of the यज्ञ मंत्र also. ओम हे प्रभु, आप आश्चर्य में एवं सबसे महान हैं. आपकी महानता मित्र, सूर्य, वरुण, जल एवं अग्नि में दिखाई देती है. आपकी शोभा पृथ्वी, आकाश एवं अंतरिक्ष में सर्वत्र विद्यमान है. आपकी छटा चार और अचर में दिखाई देती है. आप अपने प्रकाश और तेज से संसार को जीवन दान देते हैं. विश्व के आधार प्रभु, महिमा तब अपार. कौन थल है विश्व मध्य, जहां न तुम करतार. तेरी छटा देख रहे सर्वत्र हे भगवान. अंतरिक्ष आकाश में और इसी जहान. चर अचर में तुम समाये, जल थल में विद्यमान. अग्नि में चमके आप ही, नभ में भी भगवान. छटा तुम्हारी निरख कर सेवक है हैरान. चुप्पी में ही कर रहा तेरा ये गुणगान. प्रभु तब महिमा ऋषियन गाए, श्रुति मंत्रों में जो लिख पाए. सेवक उनके भाव न जाने, ऋषियन के ना भाव पहचाने. फिर भी की ना इस दुसाहस, प्रभु कृपा पर उस रख विश्वास. O God, you are astonishing and the greatest of all. Your abounding greatness is visible in the sun, water, and flame. Your splendor is overspreading in the earth, the sky, and beyond. All the living and lifeless reveal your magnificence. You bestow life to the entire universe by your light. O God, the base of universe, boundless is thy grace. Devoid of thy presence, there is no such space. Thy abounding beauty, visible everywhere, O Lord, in the heavens and sky and in the entire world. In moving and motionless, in land and water you dwell, you shine in flame too, and in the sky as well. By beholding thy grace, this Sevak surprises, and alone in the silence, singing thy praises. Rishis sang thy glory. In Vedic mantras described, Sevak knows not the thoughts, the Rishis those ascribed. Yet writing these words, touching the highest lore, relying entirely on thee, bless me, my dear Lord. Look at the humility of a great Guru. Verse number 19. Yajurveda, Atharvan Rishi, Trishtup. And I'm sure most of you are familiar with this very popular mantra when we do the pujas. Om Tat Chakshu Devhitam Purustat Shukram Uchrat Pashem Sharda Shatam Jivem Sharda Shatam Shinuyam Sharda Shatam Pravram Sharda Shatam Avina Syam Sharda Shatam Bhuyash Sharda Shatat. ओम, हे प्रभु, आप संसार के सर्व ज्ञाता हैं. आप विद्वानों के मित्र हैं. आप इस दुनिया को रचना के पूर्व भी विद्यमान थे. आप शुभ एवं महान हैं. आपसे प्रार्थना है कि हम 100 वर्ष तक जिएं. हम 100 वर्ष तक सुने और हम 100 वर्ष तक आपके गुण गाते रहें. हम 100 वर्ष तक किसी पर भी निर्भर न रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक जिए. हम 100 वर्ष से भी अधिक स्वाधीनता से देख सकें, सुन सकें, जी सकें और आपके गुण गा सकें. अनादि पुरुष ब्रह्म ने कई रचे संसार. इस रहस्य को समझना है बड़ा दुश्वार. कोई नहीं है जानता कब से है करतार.
ये भी ना कोई जानता, कितने रचे संसार। प्रभु की शक्ति अपार है, देवें वे वरदान। जियो 100 साल तलक, सुने सदा मम कान। रहूं अधीन 100 वर्ष में, करूं प्रभु गुणगान। देख सकूं 100 साल में, यही मिले वरदान। किस विध प्रभु की महिमा बखानू, मैं तो उनसे मांगन जानू। 100 वर्ष मेरी आयु होवे, तन निर्भर ना किसी पे होवे। So long life is good only when we are not dependent. And we won't be dependent if we learn how to take care of this body in a sattvic way, in a yogic way. Oh God, you are the knower of the entire universe. You are a friend of the wise. You were present before the creation came into existence. You are glorious and the most auspicious. We pray you to grant us lifespan of 100 years. Let us keep hearing and singing thy praises for 100 years. Let us live independently for the lifetime of 100 years without being dependent on anyone else. More than 100 years even, we may keep seeing, hearing, and singing thy glory. The eternal being is Brahma. Many worlds he did create. It is arduous indeed to sense this secret. None knows the fact, since when God pervades, neither anyone knows how many worlds he made. Infinite is thy power, shower me with blessing. For 100 years I may live, my eyes keep seeing. I may remain self-dependent, keep seeing, hearing, singing thy glory for 100 years. Bestow on me such blessing. How to express his grace, I only know to ask from him. For 100 years I may live, while depending upon none. Another mantra from Yajurveda, and this is also the prayer mantra by Rishi Prajapati, Chand Brihati. Om Namaha Shambhavaye cha, Mayo Bhavaya cha, Naman Shankaraya cha, Myaskaraya cha, Namah Shivaya cha, Shiv Taraya cha. ओम भगवान त्रिगुणातीत हैं, वे कल्याणकारी शंभु हैं। उनका स्मरण, उनका नाम और कीर्तन जन के दुखों को हरने वाला है। वे गति और प्रगति के आदि कारण हैं। मयो भवाय, उनके द्वारा ही संसार में चर अचर सभी गतिशील हैं। सूर्य, चंद्र और समस्त ग्रह उनके कारण ही गति में हैं और पृथ्वी पर सभी जीव भी गतिवान हैं। भगवान की कृपा से ही मनुष्य को चित्त की शांति और मानसिक एकाग्रता, शंकराय की उपलब्धि होती है। भगवान की कृपा से मनुष्य दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक उन्नति करता है। मेयस कराए, भगवान की कृपा से जीव को मोक्ष, शिव की प्राप्ति होती है और जीव परम गति पाता है। शिव तराए, हमारा उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। शिव रूप भगवान महा, कल्याणकारी ही सोए। हितकारी भगवान को नमस्कार मम होए। जो भी गति है जगत में, अंतरिक्ष में जान, सभी गतियों का कारण भगवान ही लो मान। जन प्रगति है करत जो, दैहिक दैविक जोए। हो या प्रगति आध्यात्मिक, प्रभु शक्ति से सोए। सर्वोपरि भगवान जो, ओमकार के नाम, बार बार उसको करे ये सेवक प्रणाम। आदि सृष्टि से ऋषि मुनि गाए, प्रभु महिमा का पार न पाए। वेद वेदांत सभी हैं हारे, नेति नेति वे कहते सारे। God is beyond the three gunas. He is benevolent, Shambhu, to all. His remembrance, chanting of his name and glory vanish all our sufferings. He is eternal cause of motion,
and advancement. By him alone, all the moving and motionless beings are active. Because of him, the sun, the moon, all the planets are in motion, and all creatures move on the earth by the grace of God alone. Man attains peace of mind, mental concentration, and thus strives for physical, mental, and spiritual progress. By the grace of God alone, one attains moksha, the state of ultimate joy. We bow to him millions of times. God in the form of a Shiva, generous to all always, to that benevolent Lord, obeisance every one pays. An emotion in the world and also in the space, basis of all the motions is only the God's grace. Whatever progress one makes, physical and mental that are, or on the spiritual path, possible only by his power. God is above all else. Om is the name. Sevak bows to him always again and again. Sages sang since eternity. Boundless is God's fame. The Vedas and all relented. No end, all proclaim. So neti, neti means no end, na iti, neti. So in the footnote, gunas means the virtues or qualities of a person or thing, the intrinsic nature of a person endowed by birth, depending upon the sanskars, impressions of thought and deeds of past lives on mind. So that means whatever our predominant gun is, it is because of our own past karmas. These gunas are of three kinds. All in the universe possess these three guns. Although in different proportions, these guns are also known as Maya because these delude a person and one works even involuntarily under their dominance. Sattvic nature has gentleness, purity, wisdom, and happiness, etc. Rajasic nature has greed, possessiveness, and passions, etc. as chief qualities. Tamasic nature has anger, violence, carelessness, etc. as the predominant ones. So let's stop it here because we are doing only 5 mantras each time. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate Om Shanti 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 Om. Thank you very much.